Hello, everyone, and welcome to today's webinar on Amazon Web Services hosted by Speak. I can see students are still logging in. In case somebody is facing any problem, tell that person to join in from laptop. There'll be no hassle because in the mobile screen, there is a join button which students are not able to see. So it's better you log in from laptop. There'll be no hassles. Okay. We'll start with the session. I'm Sandeep Sharma from SPIC, and I will give you a little brief about SPIC organization before we start with the AWS session. Now, SPIC stands for Society for Promotion of IT in Chandigarh, which comes under the aegis of Department of Information Technology, Chandigarh Administration. It's a government body. Okay, it's a technical arm of Department of IT, Chandigarh Administration. SPIC was established by Chandigarh administration in 2001 with a mandate to implement all the IT policies of Chandigarh administration. Okay. Now, since then, SPIC is playing a very important role in executing all the e-governance projects of Chandigarh administration, be that Sampark centers, be that e-campus solutions, okay, all technical consultancy. We are playing a very pivotal role in all these projects. We are into development of web-based solutions, ERP solutions, mobile application development, technical consultancy, network and database management solutions, and providing technical manpower to mainly to government sector also. So our mandate is also to create talent pool for the IT industry for Tri-City. That's why we do a lot of human development activities under which we are conducting a lot of IT trainings for students and for IT professionals since 2001. So we have a very vast experience as well as the imparting the high-end training programs to the students and IT professionals. Apart from that, we also run a very unique incubation center. I don't know whether you guys are aware or not. It's called SPIC Incubation Center, and the name of the building is Entrepreneur Development Center, where we nurture young entrepreneurs and startup companies by giving them infrastructural support. As you can see, this is on your screen that this is the the setup, the plug and play facility which we provide to the young entrepreneurs as well as to the startup companies. Where we provide infrastructure support and conducive environment to grow. We have a state-of-the-art 1.5-acre facility in Chandigarh Technology Park in plot number 20, which is next to Infosys campus. I hope everybody is aware where is Infi campus in Chandigarh. So our building is just adjacent to that. We share a common wall. Now, friends, as you are aware that we are going through this COVID-19 crisis, and due to this outbreak of COVID-19, a regular conventional classroom has been suspended. And in order to fill that gap, SPIC has launched its virtual classroom training portal and offering all its IT courses through its state-of-the-art virtual classroom learning, which is, this virtual classroom is actually a way forward during this crisis. So now getting on with the session, I would now introduce Mr. Ajay Markan, who's a senior faculty with SPIC and who has more than 20 years of experience in this field and working with SPIC from last 15 years. Now I would ask Ajay to start the session. Over to Ajay. Good afternoon, everyone, and welcome to the webinar. My name is Ajay Kumar, and I am working with the SPIC for the past 15 years. The topic for today's webinar to AWS Cloud. Now, what is a cloud and why do we need that? To understand the cloud, we will first see the on-premises IT infrastructure. For an organization to set IT infrastructure, it requires a lot of hardware, servers, storage devices, routers, switches, firewall, and software components like operating system, databases, antivirus softwares. Apart from that, high internet connectivity and 24-hour power supply is also required. तो ये मैंने आपको इन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, जो अगर कंपनी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई पहले स्टार्ट करा हुआ है, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्डवेयर टू
continue its business. Now, with the help of cloud computing, all these problems can go away. With cloud on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing. Instead of buying and maintaining IT infrastructure in our company, we can access it from the cloud. Cloud providers in huge data centers. So this is an image of data center managed by cloud provider like AWS. It has servers, huge storage, and networking equipment. It also provides all kind of softwares like operating system, RDBMS, and user, etc. You have to create an account with the cloud provider. तो अगर आपने इस क्लाउड को यूज करना है तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है. एंड क्रिएटिंग एन अकाउंट इज वेरी सिंपल. जैसा हम जीमेल में या हॉटमेल में अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही एक अकाउंट क्रिएट करना है. सिंपली वी हैव टू फिल द फॉर्म एंड अकाउंट विल बी क्रिएटेड. तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जितने भी रिसोर्सेज डाटा सेंटर में पड़े हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर्स यूज डाटाबेस करने हैं. तो इट इज़ वेरी सिंपल. आपने जस्ट फ्यू क्लिक्स के साथ ही आप इसको मैनेज कर सकते हो. आपको कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू पे ओनली what you use in the cloud. So cloud computing is similar to electrical services, where we simply plug into electrical grid and get low cost reliable power supply on demand, and you have to pay only for the electricity you consume. Similarly cloud services भी वैसी हैं कि आपने पे क्लाउड सर्विसेज को कंज्यूम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से एज ए सर्विस आपने कंज्यूम करना है. जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने सर्विसेज आप कंज्यूम करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड. फर्स्ट इज you don't have to make upfront investment in the hardware, and you don't have to spend a lot of time and effort in managing and upgrading that hardware, and you have to pay when you consume computing resources. यहाँ पे हमें हार्डवेयर को परचेज करने के लिए अपफ्रंट कैपिटल की जरूरत नहीं है. वी कैन जस्ट स्टार्ट with pay as you go prices, and then we have another advantage which is massive of scale. Now the usage of all the customers are aggregated, cloud providers can achieve high economies of scale, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स होते जगह पे concentrated. So cloud provider can achieve higher economy of scale and they can pass the savings to the customers. So the customers have to pay less for their services. And the next advantage is it eliminates guessing on your infrastructure capacity needs. क्या है परचेज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें उसको पहले से ही उसकी कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितने सर्वर्स हमें चाहिए, कितना स्टोरेज हमें चाहिए, ठीक है. तो समटाइम्स इट हैपेंस कि आप बहुत सारा हार्डवेयर रिसोर्स परचेज कर लेते हो और वो जो ओवर एस्टिमेटेड कैपेसिटी हो जाती है वो सारा अंडर यूटिलाइज रहता है, ठीक है. और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो अंडर एस्टिमेट हो गई, कैपेसिटी आपने कम बना ली, कंप्यूट पावर आपके पास कम है लेकिन आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है. तो ये हमें इन प्रीमिसेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें ये कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ती है. बट व्हेन वी यूज इट इन क्लाउड, तो क्लाउड में हमें सिर्फ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उतना हम यूज कर सकते हैं. इफ यू नीड टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसको स्केल अप और स्केल डाउन वेरी इजीली कर सकते हैं. So with cloud computing, these estimating away. Advantage of cloud is speed and agility. Now in a cloud computing environment, new IT resource only a click away. Simply log in and new resources, servers, databases, etc.
can make resources available to your developers within minutes. This results in dramatic increase in the organization. सपोज करो किसी डेवलपर को कुछ रिसोर्सेज चाहिए, इट रिक्वायर्स सम सर्वर्स और कुछ डेटाबेस चाहिए उसको, तो नॉर्मली उसको ये डेटाबेस परचेज करना या सर्वर परचेज करना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट इन क्लाउड within minutes you can get this. So, and you can easily deploy application in multiple regions also. So, आपके जो customers हैं, let's say they're lying in Japan, तो आप अपनी वेबसाइट्स और डेटाबेस जापान में लॉन्च कर सकते हो विद इन क्लाउड। तो जिससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स की स्पीड जो है, एक्सेसिबिलिटी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। So this is another benefit of cloud computing. And now we will discuss the types of cloud computing. So there are mainly three types of cloud computing. First is infrastructure as a service. Second is platform as a service. And third is software as a service. Now in infrastructure as a service, it contains basic building blocks for cloud IT. Typically provide access to the computers, networking features, and data storage space. Here the cloud simply manages the hardware infrastructure, and you have to install operating system, database, and other softwares of your choice. So it will give you maximum flexibility in choosing the hardware. And in infrastructure as a service, you can quickly scale up and scale down the infrastructure as the demand increases or decreases. The next type is platform as a service. It usually bundles hardware with the operating system. ये एक पैकेज देता है जिसमें हमें हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें साथ में मिल जाता है, तो जिससे कि हमें सारी जो है मैनेजेबिलिटी जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर हो जाती है। ठीक है, सो इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस we can focus on the development and deployment of the services. हमें underlying infrastructure, operating system as well hardware को manage करने की जरूरत नहीं पड़ती. And then third is software as a service. It provides the end user with the applications and completed product that is run and managed by the service provider. For example, जैसे हम Google Docs use करते हैं, this is an example of software as service. तो गूगल डॉक्स हमें एज ए सर्विस की तरह मिल रहा है, ना तो हम के लिए अपने कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, ना कोई एप्लीकेशन क्रिएट करी. जी ड्राइव इज अनदर एग्जांपल, ऑफिस ऑनलाइन एंड जीमेल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. So in IaaS, only hardware will be managed by the cloud provider. In PaaS, hardware as well as operating system will be managed by the cloud provider. And in SaaS, end user application is available to you. Now we'll discuss AWS, Amazon Web Services. It is most widely adopted cloud platform. It offers 175 fully featured services globally, and millions of customers, including fastest growing startups, largest enterprises, and leading government agencies, are using AWS to lower cost, become more agile and innovative. And apart from Amazon Web Services, there are other cloud service providers are also there. For example, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Alibaba, Salesforce, etc. Now, Amazon leads this 100 billion cloud market. Amazon has 33% market share, followed by Microsoft, which has 18%, then Google Cloud 8%, IBM Cloud 6%, Alibaba 5%, and so on. So you can see that AWS has maximum market share. AWS has passed over 1 million active customers, and those customers are businesses. Normally क्या होता है, कस्टमर एंड यूजर नहीं है यहाँ पे, जो कस्टमर यहाँ पे वो बिग बिजनेस हाउसेज हैं जो कि क्लाउड के कस्टमर्स होते हैं. ठीक है, सो more than 1 million companies are using AWS cloud, which generate a huge number of skilled people required
in the job market. Now, enterprises like Kellogg's, Nokia, New York Times, Toshiba, Netflix, Pfizer, Unilever, Adobe, MediaCorp. So these are the big, enterprises houses which are using AWS. Now, success story of Netflix. Uh, Users can stream Netflix shows and movies from the internet in the anywhere from the world. AWS enables Netflix to quickly deploy thousands of servers and terabyte of storage within minutes. तो Netflix ने अगर बहुत सारी मूवीज को अपलोड करना है तो वो विद इन मिनट्स कर सकती है, उसको कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली क्लाउड के ऊपर टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज विद इन मिनट्स डिप्लॉय कर सकती है. So Netflix is an online content provider which users can stream Netflix shows and movies from anywhere from the world. Netflix delivers billions of hours of content globally. It is partnering with AWS for the delivery of content and other services. AWS enables Netflix to quickly deploy thousands of servers and terabyte of storage within minutes. In year 2000, Netflix worth was mere $50 million. But in 2016, Netflix made a comeback and $87 billion worth of company. It was not a smooth ride to success though. In year 2008, Netflix became victim of major database corruption. That time it was using DVD by mail service. Now, due to this data corruption incident, DVD shipment was disrupted for 3 days. So Netflix management decided to move its operations to AWS cloud. And after shifting to AWS, scaling became seamless as petabyte of data could be used to stream videos within minutes. Thanks to the elasticity of cloud. So based on user demand and with the help of AWS, Netflix could scale up or scale down their data warehousing usage with ease. So after the success story of Netflix, we'll discuss the global infrastructure which AWS has. Now, AWS infrastructure consists of multiple regions. So these are globally isolated locations around the world. And there are 26 regions available globally to service AWS customers, which is a big number because AWS regions are globally available. Now, how would you select to host your resources? So the reason to select particular region is, one of the reason is that you have to check whether there is data collection restriction policy by the government in that region or not. If there is some policy of the government that you cannot collect the data in that region, so you will not host your resources in that particular region. And another reason is that you can host your resources like web servers database nearer to your customer. So choose a region accordingly so that your resources are nearer to the customer. So it will increase the speed and it will reduce the latency. Some of the AWS services are not available in all region. You will not opt to those services in that particular region. And another reason to select a particular region is that cost of AWS services also varies with the region. तो कहीं पे अगर आपने सर्विस होस्ट करनी है किसी रीजन में, सपोज करो आपने एक वेबसाइट को होस्ट करना है एंड यू वांट टू होस्ट इट इन यूएसए, तो मे बी वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो रादर देन होस्टिंग इट इन इंडिया. ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कि आपने कौन से रीजन में अपने रिसोर्सेज को होस्ट करना है, तो वो आप कॉस्ट के हिसाब से भी वेरी करेगा. देन availability zones. So these huge regions are divided into availability zones. So you can consider that availability zone as data centers. So, data center has all the physical hardware,
such as server, router, storage, racks, wires, everything, and all the software components that make cloud run, they are all located in the availability zone. All availability zones in the region are interconnected with high bandwidth, low latency networking over fully redundant and dedicated fiber. इसका मतलब क्या है कि एक रीजन में, लेट्स से वी टॉक अबाउट एशिया पैसिफिक रीजन, तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स हैं वो एक तरह से रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, एक अवेलेबिलिटी जोन में अगर आप करप्ट हो जाते हैं फॉर एनी नेचुरल क्लैमिटी, तो वो दूसरे अवेलेबिलिटी रीजन में आपके पास अवेलेबल रहेंगे, कि वो सारे जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं दे आर कनेक्टेड विद फाइबर which is provide very high bandwidth. Availability zones provide you redundancy because of this. So then we move on to free AWS account. So AWS offers free tier account, and it provides a customer with the ability to explore and try out AWS services free of charge. तो आपने अगर AWS को ट्राई करना है तो आपके पास एक फ्री टियर अकाउंट है. You create a free tier account, no cost will be applied, but there are specified limits up to which you can use these services. So that means if you need to learn AWS, you can create free tier account in AWS. So it will be available for 12 months after you create the account. Some services extend free tier usage past 12 months, and free tier is available only for the new customers. That means after 12 months, you will not be able to recreate free tier account. And to create a free tier account, you have to provide credit card or debit card. So that is a kind of limitation, you can say. And then we will discuss AWS EC2, simple storage service, identity and access management, virtual private cloud, and Amazon Route 53. So EC2 is an elastic compute cloud. We can think elastic compute cloud as a personal computer or a server machine in the cloud. So like in our organization, when we start creating IT infrastructure, the first thing we have to purchase is a computer or a server. So similarly in a cloud, you will first host EC2 instance. So it is very simple. You can host EC2 instance with few mouse clicks and your server will be ready. So basically it is a web service that provides secure, resizable compute capacity in the cloud. EC2 is resizable because you can change the hardware configuration at any time. For example, you change it from small to large. This will change the hardware configuration such as increased RAM, increased processing power. And apart from changing the configuration, you can also quickly scale up and scale down the number of EC2 servers according to your requirement. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है तो यू कैन ऐड फ्यू मोर EC2 इंस्टेंसेस विच आर बेसिकली सर्वर्स, एंड रिक्वायरमेंट अगर आपकी डाउन होती है तो आप इनको स्केल डाउन भी कर सकते हो. अकॉर्डिंगली आपको चार्ज कम हो जाएगा. When you are creating EC2 in the cloud, it will ask you which hardware configuration you want to use. Now choose hardware configuration, you have to choose instance types. So instance type determines which hardware the host computer will be using. Each instance type offers different compute, memory, storage capabilities. So here, so you can see the first instance type is M5 large. If I choose this particular instance type, I will get two virtual CPUs, 8 GB of memory,
high network performance, Intel Xeon Pentium Platinum, and clock speed of 2.5, and it will cost me $0.096 per hour. This is a per hour cost. And now operating system on this particular instance, we have chosen the hardware now. अब इसके ऊपर operating system कैसे install करना है? So that Amazon machine images. After choosing hardware configuration, now to choose this, we'll use AMIs. So operating system images, which is known as Amazon machine images, are used. It is a template for your instance. It packages operating system and additional software for your instance. तो AMI के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और इसके अंदर एडिशनल पैकेजेस भी इन्वॉल्व हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली चूज करना है. लाइनेक्स चूज कर सकते हो. लाइनेक्स के वेरियस वर्जन हैं यहाँ पे. रेड हैट एंटरप्राइज, उबुंटू, एंड यू कैन ऑल्सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कोई भी आप AMI चूज करोगे, अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम विद पैकेजेस विल बी अवेलेबल टू यू, और आपका सर्वर जो है रेडी हो जाएगा. नाउ इज इंस्टेंस purchasing option. तो इंस्टेंस आपने परचेज करना है, तो इट विल आस्क यू वेदर यू वांट टू गो फॉर ऑन डिमांड, यू वांट टू गो फॉर रिजर्व्ड प्राइसिंग और स्पॉट प्राइसिंग. इसमें कॉस्ट का भी डिफरेंस सभी में. तो फर्स्ट विल सी कि ऑन डिमांड इंस्टेंसेस कौन से होते हैं. तो इन दिस परचेज ऑप्शन, द ऑन डिमांड इंस्टेंस, you will pay per hour basis. Pay only when EC2 is running, when you don't have to pay when it is stopped. And no longer commitment is required here कि आप 1 साल तक यूज करोगे. जब भी आपको यूज करना है आप ऑन कर दो, जब बंद करना है ऑफ कर दो, सिर्फ उतने ही चार्जेस आपके लगेंगे. एंड आप इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो ऑन डिमांड में. ऑन डिमांड आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बट ये तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है. देन नेक्स्ट इज रिजर्व्ड इंस्टेंसेस. इन रिजर्व्ड इंस्टेंसेस हमें एक कमिटमेंट देना पड़ता है कि हम 1 साल तक या 3 साल तक इसको यूज़ करेंगे, कौन से रीजन में यूज़ करेंगे और कौन सा इंस्टेंस टाइप हम यूज़ करेंगे, इसको हमें फिक्स करना पड़ता है. एंड वंस यू फिक्स इट, it will save you up to 60% to 75% of the cost. जितना आपको ऑन डिमांड में पे करना पड़ता है, उससे 75% लेस आपको यहाँ पे रिजर्व्ड इंस्टेंस में पे करना पड़ता है. लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि हमें देना पड़ता है कि 1 साल तक यूज करेंगे या 3 साल तक यूज करेंगे. रीजन को फिक्स करना पड़ता है, इंस्टेंस टाइप को हमें फिक्स करना पड़ता है. एंड देन वी हैव स्पॉट प्राइसिंग ऑप्शन. There are unused compute capacity available in the data center. तो डेटा सेंटर में बहुत सारे हजारों सर्वर्स पड़े हुए हैं, तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि सारे यूज नहीं हैं, अनयूज भी पड़े हुए हैं. तो वो जो सर्वर्स हैं या रिसोर्सेज हैं, दोज रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर स्पॉट इंस्टेंस. इसके लिए आपको एक बिड प्राइस करनी पड़ती है और आपको इसमें अप टू 90% डिस्काउंट मिल जाता है. बट अगर अमेजोन के पास डिमांड आ जाती है, तो वो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो उसको आपसे वापस ले लेगा और दूसरों को वो दे देगा. तो दैट इज द अ ड्रॉबैक ऑफ स्पॉट प्राइसिंग. ठीक है. एक्स्ट्रा जो अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, ओनली दोज रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू यू. एंड देन नेक्स्ट सर्विस इज सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3. Amazon S3 is a storage service that you use to store and retrieve any amount of data at any time and at anywhere from the web. Simple storage is high-speed, low-cost, scalable web-based service. It is designed for the storage of online backups and archiving of data. You can access any amount of data, and फाइल लिमिट इज 5 TB. मतलब एक फाइल की लिमिट, सिंगल फाइल जो है उसका साइज 5 TB तक हो सकता है. तो दिस इज अ ह्यूज साइज. 5 TB की तो हार्ड डिस्क होती हैं, तो ये सिंगल फाइल ही हमारी यहाँ पे 5 TB की हो सकती है.
So files can be stored in bucket. A bucket is like a फोल्डर इन द हार्ड डिस्क. जैसे हम हार्ड डिस्क फोल्डर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम एक बकेट क्रिएट करेंगे. Bucket will use for storing the files. It can also have folders under the bucket. So when you create a bucket in S3, you have to give it a name, and that name has to be globally unique, irrespective of which region they are created in. The buckets can be accessed by using URL, and it is recommended that the bucket name follow DNS naming conventions. All letters should be in lowercase. Means जब आप S3 स्टोरेज उसको एक URL मिल जाता है, ठीक है, आप उसको ग्लोबली इंटरनेट से कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. तो जो आप सेकंड बकेट क्रिएट करोगे उसका नाम सेम नहीं हो सकता, या वर्ड में कहीं पे भी बकेट क्रिएट होती है उसका नाम सेम नहीं हो सकता क्योंकि उसका URL यूनिक होना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रीजन नेम इज S3 EU West 1 एंड amazon.com और बकेट का नाम क्लाउड. तो इस तरह से हम बकेट्स को नेम देके कहीं से भी हम उसको यूज कर सकते हैं. एंड S3 provides highly available and durable storage solution under one bucket multiple data centers in the region. अभी हमने 8 अवेलेबिलिटी जोन्स को डिस्कस करा था जो कि हाईली कनेक्टेड डेटा सेंटर्स होते हैं. तो इसमें जो बकेट के अंदर हम डेटा रखते हैं दैट डेटा इज रेप्लिकेटेड टू अदर डेटा सेंटर्स इन द सेम रीजन. तो दैट विल प्रोवाइड यू रिडंडेंट. रिडंडेंट डाटा होगा. एक डेटा सेंटर अगर डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से तो डाटा इज अवेलेबल इन अनदर डेटा सेंटर. एंड दिस सर्विस इन S3 इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो रेप्लिकेट करता है विद इन द रीजन. एंड देन देयर आर स्टोरेज क्लासेस. So storage classes are used to distinguish use cases of particular object in the stored bucket. There are few types of storage classes. List is given here. First is standard storage class. It is used for frequently used objects. Then is standard 1A. Standard 1A class जो है infrequently used object के लिए use होती है. And then Glacier is there, long-term data archiving, and deep archiving is used for archiving rarely accessing, and retrieval time is averaging 12 hours. इसका क्या मतलब है कि हमें क्लाउड में स्टोरेज स्पेस लेना पड़ता है तो उसमें हम क्लास हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि कौन सी क्लास को हमने यूज करना है. अगर हम फ्रीक्वेंटली डेटा यूज करते हैं तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड क्लास यूज करेंगे विच इज कॉस्टली, बट फ्रीक्वेंटली डेटा आप उसमें एक्सेस कर सकते हो. वेरी हाई स्पीड, वेरी रिलायबल एंड ड्यूरेबल. सेकेंड क्लास जो स्टैंडर्ड 1A है उसमें हम जो इसको हम कम यूज करते हैं उसमें रखेंगे और उसकी कॉस्ट भी हमें कम पड़ेगी. एंड थर्ड इज ग्लेशियर. विद लॉन्ग टर्म आर्काइविंग के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो आपने यूज ही नहीं करना, सपोज करो 1 साल बाद यूज करना है, 6 मंथ बाद यूज करना है, तो फिर हम उसको ग्लेशियर में रख देते हैं. और इसमें जब आप इसको एक्सेस करोगे तो इट विल टेक आवर्स टू रिट्रीव. टाइम बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. सिमिलरली डीप आर्काइविंग जहाँ पे आपने बहुत ही यूज ही नहीं करना कोई डाटा तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो. तो इसमें जो रिट्रीवल टाइम है इट विल टेक अराउंड आवर्स. द नेक्स्ट सर्विस इज S3 ग्लेशियर दैट वी हैव डिस्कस्ड. लो कॉस्ट कोल्ड डाटा यूज करते हैं इसमें हम. जो S3 है इसके कुछ फीचर्स हैं लाइक low cost and easy to use, and it is very secure. It uses SSL security. डाटा को हम जब ट्रांसफर करते हैं तो वो सिक्योर सॉकेट लेयर की सिक्योरिटी अप्लाई करता है, so which cannot be hacked, and gets encrypted automatically once it is uploaded. ताकि वहाँ पे जो डेटा है ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है. इट इज़ वेरी स्केलेबल. जितना मर्जी ह्यूज आप डेटा साइज यूज कर सकते हो, एंड वेरी हाई परफॉर्मेंस इज देयर. And then is identity and access management. Now, identity and access management enables you to manage access to the AWS
services and resources. Using IAM, you can manage users, group, and roles, and they allow you to manage the permissions on AWS resources. जैसे हम अपने नेटवर्क में यूजर्स क्रिएट करते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, तो सिमिलरली जो हमने अपना क्लाउड क्रिएट करा है उसके अंदर हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको एज अ सब एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं या कहीं पे भी उनको हम परमिशन दे सकते हैं अपने क्लाउड के अंदर. So IAM user account objects allow you to have individual user to access the AWS environment with several credentials, and you can issue user accounts to anyone whom you want to consider as co-administrator. And then we have IAM groups. IAM groups are the permission assigned to them via policies, allowing them to have members. Having users assigned to these groups allows you to uniform approach to access management and control. यूजर्स को ऐड कर देंगे, ग्रुप को कुछ परमिशंस देंगे तो ऑब्वियसली उसके मेंबर्स को भी सेम परमिशंस मिल जाएंगी. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग ग्रुप्स इन IAM. And next object that can be created in IAM is IAM role. So this is an identity that you can create in your account with specific permissions. तो जो IAM role है इसको भी हम permissions दे सकते हैं और इसके जो members हैं तो वो मेंबर इसके यूजर्स भी बन सकते हैं और सर्विसेज भी मेंबर बन सकते हैं. बेसिकली व्हेन यू वांट कि एक सर्विस को आपने दूसरी सर्विस के ऊपर कुछ परमिशन देनी है तो वो रोल के थ्रू हो सकता है. फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस है, उसको हमें कहीं S3 के ऊपर परमिशन देनी है तो दैट कैन बी डन यूजिंग IAM रोल. मेक EC2 मेंबर ऑफ अ IAM रोल, रोल को S3 के ऊपर कुछ परमिशन दे दो तो ऑटोमेटिकली EC2 को भी सेम परमिशन मिल जाएंगी. Next is Amazon VPC, which is virtual private cloud. So it enables you to define a virtual network within the AWS cloud dedicated to your AWS account. जैसे हम एक अपने नेट प्रीमिसेस में नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं तो वैसे ही हम क्लाउड के अंदर भी एक अपना ही नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. ये हमारा एरिया है, हमारा नेटवर्क है क्लाउड के अंदर. तो इसमें VPC में हम अपने सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं और जो सबनेट डिवाइड subnets can have granular control on AWS resources like EC2 databases. We can make public subnets for the resources that must be connected to the internet, and we can have private subnet for the resources that you want to be connected to, not to be connected to the internet. तो एक हमने एक नेटवर्क क्रिएट करा VPC, उसके अंदर सबनेट्स क्रिएट कर दिए और सबनेट्स में जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हम एक्सेस रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. So VPC enables you to launch AWS resources like EC2 databases into the subnet that you have defined. इसमें जो आपके सामने जो इमेज है इसमें बेसिकली सबसे टॉप वाला जो बॉक्स है that is showing you region and the name is US East 1. Under that we have availability zone, and under availability zone we have virtual private cloud. तो ये जो VPC है ये हमारा एरिया है, इसके अंदर हम सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट क्रिएट करा हुआ है. एंड जो रिसोर्सेज हम लॉन्च करते हैं वो हम अपने सबनेट के अंदर लॉन्च करते हैं, जैसे कि EC2 इंस्टेंस है जो कि मेन सर्वर है या डेटाबेसेस हैं, वो हम सबनेट्स के अंदर लॉन्च करते हैं. तो पूरे सबनेट के लिए देयर इज व्हिच इज नोन एज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. सो दिस सिक्योरिटी इज अप्लाइड ऑन एंटायर सबनेट. इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं रूल, कौन सा ट्रैफिक अलाउड है, कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक्ड है, पूरे सबनेट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा. एंड देन अनदर सिक्योरिटी लेयर इज देयर व्हिच इज नोन एज सिक्योरिटी ग्रुप. Security group acts as a firewall to control the traffic for one or more EC2 instance. Security group controls the traffic
to EC2 according to the rules defined in the security group. So this is second layer basically. So security group के अंदर भी rules create कर सकते हैं, accordingly traffic को वो allow करेगा. And then there is a implicit router available that performs all routing functions in the VPC. And another component VPC is Internet Gateway. An Internet Gateway is a VPC component that allows communication between your VPC and Internet. Important component. It provides the target in your VPC route table for the Internet routable traffic. Then we move to next service, which is known as Amazon Route 53. So Amazon Route 53 is highly available and available domain name system web service. It translates domain names into their corresponding IP addresses and direct traffic to corresponding website. In simple terms, it converts domain name addresses like www.example.com to IP addresses like 10.0.0.1 that computer used to connect to each other. So DNS is a very important component. So DNS Amazon में हम इसको Route 53 बोलते हैं. It will convert domain names into IP addresses. Now we come to the job scenario. Now with increase in adaptation of cloud computing, demand for this skill is also increasing. According to a report by Search Cloud Computing, there is a huge surge in hiring rates for IT professionals with cloud skills. So it is necessary to have right skills to land a good job. Now skills in software as a service, infrastructure as a service, automation, agile and software defined network are going to be critical for IT professionals to get these jobs. Now keeping this skills in mind, the job profiles such as cloud architect, cloud software engineer, cloud enterprise architect, and cloud infrastructure engineer are in great demand. The top 3 countries for cloud computing jobs according to the Forbes are China, which has requirement of 7.5 million jobs. Second is USA, which has requirement of 4 million jobs, followed by India, which has requirement of 2.2 million jobs. Now, according to Forbes, the average salary for the cloud professional is above $1 lakh per annum. Now, SPIC is also offering courses like AWS Solution Architect, SQL Server Administration and Implementation, Managing Network with Windows Server. The duration of each course is 60 hours. And you can also download the course detail from this www.spicindia.com. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप course details download कर सकते हो. And we also provide placement assistance to final year or final semester students. SPIC offers virtual classroom experience. So we are offering right now, we are offering virtual classrooms also. So in that we have live interaction. So there is nothing to be played. Study material will also be shared with the trainees. Trainees interested in live projects will be allocated projects through virtual classrooms. SPIC virtual classroom is equipped with multimedia, sharing integrated test engines, attendee feedback, and attention indicator features, which will enhance the experience. We can check attentive and non-attentive students at any time. So if you have any queries regarding this webinar, kindly let me know, or you can reconnect later at the given phone number and email addresses. Thank you.
Ajay, in case anybody has because a lot of students were asking some questions regarding AWS. So were they asking whether we can have a free account for 12 months in case they wanted to, use the AWS services. So in case anybody has a question, can raise their hand, and we would love to answer them right now. Let me answer this first, Andy. Yeah. Yeah. You can unmute the mic. This one. Yes. Yeah. So that is right that any candidate can create free tier account in AWS. That will be available for 12 months, and after 12 months the account will expire. Or if you don't, log out of the account or exit the account and you use the services, then standard charges will be applied. कई बार क्या होता है कि हमने अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, 12 मंथ्स के बाद हमने यूज कर लिया और उसके बाद फिर भी हमने EC2 इम्प्लीमेंट करा हुआ है, सर्वर इम्प्लीमेंट करा हुआ है, उसको हमने स्टॉप नहीं करा, तो फिर उसके चार्जेस अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, आपके पास बिल रेज हो जाता है, तो यू हैव टू पे फॉर दैट. Sandy? Amlan, can you unmute Mr. Divanshu? Mr. Ajay, anybody has asked any question? Anybody has a question? No, actually, Mr. Divanshu is trying to speak. I'm not able to find him. Ajay, you just click on unmute. You can do the same. Being a host now, you can unmute. Okay, no, I'm not able to find Mr. Divanshu actually. Okay, now it is there. Yeah. So, yes. Yes, Mr. Divanshu, you can speak now. Hello. Yeah. Yes. Am I audible? Yeah, you are audible. Very much audible. Yes, sir. So, we are the group of 3 to 4 app developers, and we are having a startup. But for that, actually, sir, we are not so much familiar about AWS. Okay. And moving for the hosting and plans, we are currently seeking help of some Indian hosting plans. Like they are charging an amount of 20,000 for 3 months. But sir, even after paying that amount, we are not getting a quality work. So we are planning to move for AWS. But sir, AWS pricing system is very difficult. Like I can't predict what will I have to pay if our database will increase in future. So how to know that? Like how can we just get an idea and estimate that if we are having a daily traffic of 1,000 people on our application, and our application is basically a video application where people see other users video, so we need a standard S3 plan. Right. So sir, can you just tell us that what will be the estimate if 1,000 people are visiting daily on the application? See, basically, they apply charges not on people. They apply charges on the amount of data that is being transferred. There are two types of charges. One is data at rest. That means the movies you have uploaded. तो उसका तो चार्ज लगेगा ही लगेगा. प्लस जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है पर MB, उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा. ठीक है ना. सपोज करो आपने 20 GB का डाटा आपने प्लेस कर दिया वहां पे, तो उसका तो कॉन्टिन्यूसली आपको चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा. बट एडिशनल चार्ज विल आल्सो बी देयर, जो कि आपका डाटा जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो कितना डाटा हो रहा है. ठीक है. इट इज नॉट 1000 यूजर्स, कितना डाटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, है ना.
अगर वीडियो है तो काफ़ी ज़्यादा डाटा होगा, ठीक है, तो वो जी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और कोस्टिंग के लिए उनका क्लियरली इसकी वेबसाइट के अंदर पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं। वो कोस्टिंग थोड़ी इनकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, तो ये तो सभी के साथ ये थोड़ा सा कि इनकी कोस्टिंग कैसे होगी। तो बट आप वहाँ पे जाके पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं इनकी वेबसाइट पे, एक एक सर्विस के ऊपर पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कितना यूज़ करोगे, कितने चार्जेस आएंगे। तो वो आपको वहीं से हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आप बाद में मेरे को कनेक्ट करके आप मैं फिर आपको बता सकूंगा इसको। अपना कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ शेयर कर सकते तो फिर हम लाइक। किया था यहाँ पे, ठीक है, तो मैं दोबारा भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। Okay, I guess most of the attendees have already left the room. Anybody else who has a question? I think Mr. Gaurav Makkar, he has raised his hand. Mr. Ajay, can you answer his questions? Yes, go ahead. No, sir. I don't have any question. गलती से हो गया सर. Okay, no problem, Gaurav. Okay. Okay. I think we can end the session now. Participation Huh? participation certificate we need to declare. I think Amlan, the most of people have left, but I'll still make an announcement that Divyanshu, if you are here, if you can hear it, you can get the participation certificate of this particular session from our website. That is www.spicindia.com. You have to visit that website, Okay, sir. and then I guess you have to put in your email ID and your details, your credential there, and then you can generate your online certificate for this AWS session. 3rd June Okay, onwards. sir. 3rd June And onwards. Can you only share the visit our link? website on, it's www.spicindia.com. It's a website, www.spicindia.com. I'll just text you, you can note it down also. And kindly visit the website on 3rd June onwards, okay? Because we'll be able to finish Okay, all sir. our sessions, and then you'll be able to generate all the certificates, okay? I'll just see if I can. You can take the detail from your Dishant sir also. Yes. Okay, sir. You can note it down. You can note it down, Divyanshu. It's www.spicindia. www. SPIC Sir, can you India. spell it, sir? SPIC India.com. See, we have already a message in the chat Okay, box. okay. You can read the link. www.spicindia.com. Okay, sir. Okay, and visit and try and generate the certificates 3rd June onwards. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, Divyanshu. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, for your everybody. time. Yeah. Good day. Excuse me, sir. Yeah. Yes. Sir, we have attendance for this session. Yes, we do have, sir. We'll be sharing this attendance with Mr. Dishant. Okay, sir. Thank you. Yo. Okay, Amlan. Okay. Should we end? Yeah, I think we should end. Okay, thank you, everyone. Thank you.